इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद पेश होगा बजट। यह एक प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पहले वो राष्ट्रपति के पास गई, उसके बाद अब यहां पर कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट में क्या क्या होगा यह समझने वाली बात है। अमोद जी हमारे साथ हैं संसद भवन से। अमोद जी, कितनी देर और मैं हम मुझे बताया कि अमोद जी नहीं है, स्टूडियो गेस्ट है हमारे साथ, हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, जयंत मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पहले भी बात कर रहे थे। जयंत मल्होत्रा जी, आम लोगों के लिए टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता है, बार बार कहा जा रहा है। इस तरह की शायद स्थिति नहीं है कि बहुत टैक्स रिलीफ मिले, लेकिन कहां उन्हें राहत मिल सकती है? सुबह से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं वो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। मुझे जहां तक लग रहा है कि या तो देखिए 12 लाख तक तो एग्जम्प्ट था ही था। सर पहले बताइए, नई टैक्स रिजीम या पुरानी? देखिए निशान जी, पिछले साल भी ये बात हुई थी, इस साल दोबारा रिपीट करूंगा। आप पुरानी टैक्स रिजीम को भूल जाइए, वो एक सनसेट क्लॉज की तरह धीरे धीरे चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में आपने 12 लाख तक की टैक्स रिबेट पिछले साल तक आपने बंद कर दिया था और बोला था स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया और कर देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद लग रही है, हो सकता है मैं टोटल गलत हूँ, जो 4 लाख तक का स्लैब है ना, 0 से 4, हो सकता है इस बार वो 0 से 7 हो जाए, कि 0 से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला 12 लाख। इनका टाइट फ्रेम कट करिए, अगर हो जाए तो बता देंगे हम लोग कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ लगातार हैं, उन्होंने कहा ये प्रेडिक्शन है। बताइए सर एक बार पहले ही ये बता दिया था उन्होंने, पहले से बता दीजिए एक बार सर, एक बार प्रेडिक्शन। जैसे हमारा 12 लाख तक का टैक्स, अभी तक हमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 12,75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। वो उसको शायद होके 1 लाख करके 13 लाख तक कर देंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो 0 से 4 तक, अगर आप 12,75,000 से ऊपर हैं करंट रिजीम में, तो अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको 0 से 4, फिर आपको 4 से 8 तक की गिनती करनी पड़ेगी। तो बजाय ऊपर का बढ़ाने के, अगर हम नीचे से टिकरिंग कर दें कि 0 से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना और फिर स्लैब रेट को आगे बढ़ा दें। अंडरस्टूड सर, मैं क्विकली बहुत सारी चीजें यहां पर जानना चाहूंगा, हमारे पास समय कम है, गेस्ट बहुत ज्यादा है। आप नंदिनी मैम हमारे साथ हैं, मैम प्रोफेसर नंदिनी दत्ता मैम। सोना चांदी ने सबको शेक करके रखा हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बजट का जो इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस में आप रुपी के ऊपर कुछ देखते हैं या नहीं देखते हैं? उसका कोई करेक्शन है कि नहीं है इससे? रुपए की करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। इन द शॉर्ट टर्म तो कोई रुपी करेक्शन नहीं है। और मुझे लगता है हमारा सरकार भी चाहेंगे थोड़ा सा रूम मिले शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस के कारण। तो मुझे इमीडिएटली तो नहीं दिख रही है। रही बात प्रेशियस कमोडिटी, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे तो लग रहा है कि जो रूथलेस करेक्शन फ्राइडे को हुआ है, उसके बाद भी 25 से लेके 40% गिरावट और आएगी। क्योंकि आप खुद समझिए कि इसकी जो रैलिंग था, ये रैली टोटली एक आर्टिफिशियल एसेट बबल पे बनी हुई थी, क्योंकि आपके शेयर प्राइसेस और शेयर वैल्यूएशंस बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जो बता रही हैं, आलोक सर एक क्विक टेक। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, मैं बड़ी बड़ी जगह की बात कर रहा हूं जहां से जनरेट होता है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि सिल्वर नहीं है हमारे पास। अमेरिका ने सर, यू आर क्रॉसिंग द फ्रेम। अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम सिल्वर अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इंग्लैंड ने मना कर दिया है। भारत के जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं उनके पास स्टॉक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा करता है, चाइना, उसका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, चीजों का डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। तो ये चांदी मांग कौन रहा है सर? सर मैं आपको सोने चांदी के बारे में बहुत साफ कर दूं कि 1 साल में 2 साल में जो इसका इंक्रीज था वो भी अतार्किक था, इरेशनल। सर ये भी बताइएगा कि आगे कहां जा रहा है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। इसीलिए इसका इंडस्ट्रियल यूज जितना है वो कई सालों से लगभग वैसा ही है, तो कोई इसमें बहुत एक्सेप्शनल सुधार की गुंजाइश नहीं है। चांदी सोने का सारा खेल जो हाल का है वो बेसिकली सटोरियों का और ऑपरेटर्स का है, और जिनका ऊपर और नीचे जाना एक तरह से आम आदमी के हिसाब से रैशनल होता है। तो मुझे इसमें बहुत वायलेंट ऊपर और नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो आम इन्वेस्टर है, सर ऊपर या नीचे?
ऊपर एक दिन नीचे एक दिन। अरे आप सर, आप देखिए इसलिए मैं एडवाइस आप जयेंद्र जी के बगल में बैठ के इन्फ्लुएंस हो गए। आलोक जी आपसे उम्मीद नहीं थी। कोई छोटा इन्वेस्टर इससे दूर रहे, इस सट्टेबाजों का गेम है ये, फिलहाल दूर रही है इससे। 2008 की सब प्राइम क्राइसिस आप सोच लीजिए, सारा तो ट्रेडिंग पेपर वेल्थ पे हो रहा है, एक्चुअल सिल्वर में कहाँ हो रहा है। आप यू आर द सेकंड पर्सन आई एम हियरिंग दिस सिंस मॉर्निंग। आप जो बता रही हैं 2008 की सब प्राइम क्राइसिस। सुमेरा नंदिनी जी, लेकिन हम जब बजट की बात कर रहे हैं, हम जब भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आज निर्मला सीतारमन फोकस कर सकती है, क्योंकि उनके लिए बहुत टाइट रोप वॉक है ये। ओनली मुझे जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही डायरेक्शन आनी चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्सेशन सब्सिडीज उससे नहीं होगा, आपको डिमांड बूस्ट करना पड़ेगा, यानी कुछ हद तक आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर से करनी पड़ेगी। पीपल आर आउट ऑफ देयर पॉकेट्स। मेरा एक प्रेडिक्शन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, एक प्रेडिक्शन। आलोक जी, अब देखिए आप इकोनॉमिकली करेक्ट हो जाइएगा, पॉलिटिकली करेक्ट मत होइएगा प्लीज। यहाँ पर देखिए, पिछली बार तो हमने मखाना देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी बिहार के लिए। इस बार कहां पर फोकस ज्यादा होगा, तमिलनाडु या बंगाल? देखिए, बंगाल और तमिलनाडु दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। रेल बजट भी अब मुख्य बजट का पार्ट हो गया है, तो मैं जो देख पा रहा हूं कि बंगाल से जुड़ी गाड़ियों के बारे में, बंगाल से जुड़े ट्रैक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमको मिल सकती हैं। तमिलनाडु तो पॉलिटिकली आप उम्मीद उतनी नहीं कर सकते, बंगाल से उम्मीदें हैं, यानी तमिलनाडु की फ्लेवर आपको दिखाई पड़ सकता है। यानी तमिलनाडु की साड़ी पहनी है, लेकिन शायद ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल की साड़ी भले ही ना हो, लेकिन वहां मिल ज्यादा सकता है, क्योंकि वहां से राजनीतिक लाभ ज्यादा होगा। लेकिन सागर सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। सागर, एक बड़ा सवाल ये कि आम आदमी के बारे में बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब बस इसके बाद संसद भवन के लिए रवाना होंगी। संसद भवन में ही है, लेकिन अब संसद भवन में जाकर बजट को पेश करेंगी निर्मला सीतारमन। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नहीं मिले, बट नेवरदलेस, लेकिन उसके बावजूद ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, औपचारिकताएं हैं, एक एक कर वो सब पूरी की गई हैं। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निर्मला सीतारमन जाकर इस बजट को पेश करेंगी, हम उस बजट को सुनेंगे। हिंदी में आपको TV9 भारतवर्ष पर ये बजट सुनने को मिलेगा और इसके हर पक्ष के बारे में, हर पहलू के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपको लगातार बड़ी बातें भी बजट की दिखाते रहेंगे। ये बजट लेकिन बहुत मुश्किल बजट भी है, सागर, ये कहा जा रहा है। सागर सिन्हा, मैं सवाल में, ये बजट एक मुश्किल बजट है, ये कहा जा रहा है। इस मुश्किल रास्ते को किस तरह से आगे तय करेंगी निर्मला सीतारमन? युवाओं को बहुत उम्मीद है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर पर फोकस रहने वाला है और उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मुश्किल बजट इसलिए है क्योंकि ग्लोबली इस बजट को देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में देखिए जो पैसा आता है ना, एक बड़ा चंक हमारा बाहर से आता है, FDI इन्वेस्टमेंट है। पिछले 1 साल से FDI का पैसा लगातार निकल रहा है। साथ ही थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि प्राइवेट जो हमारे प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी कैश में बैठे हुए, मतलब पैसा होल्ड करके रखे हुए, मार्केट में नहीं डाल रहे हैं। कारण है अनसर्टेनिटी। अच्छा, जैसे सेक्टर की आपने बात करी, किन किन सेक्टर पर फोकस हो सकता है, तो नंबर 1 सेक्टर जो होगा डिफेंस। डिफेंस 2 वजह से सेक्टर फोकस में रहेगा, क्योंकि आप देखो इन दिनों लड़ाई का माहौल चल रहा है, कभी ये देश लड़ रहे हैं, कभी वो लड़ रहे हैं, तो डिफेंस पर स्ट्रेंथ ज़रूरी है। आगे आप कई देश भी देखें, यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 50% बजट बढ़ाने वाले हैं अपने डिफेंस का। वो कनाडा ने डिफेंस का बजट बढ़ाया, पाकिस्तान तक ने बढ़ाया है, कई देशों ने डिफेंस का बजट बढ़ाया है। तो एक वजह ये भी बनती है कि हमको डिफेंस का बजट बढ़ाना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी और लड़ाई का माहौल है। दूसरा वजह ये बनता है डिफेंस बजट बढ़ाने का कि हम अब डिफेंस की इक्विपमेंट्स बाहर हमने बेचना भी शुरू कर दिया है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चर्स बनेंगी, MSME को सपोर्ट मिलेगा। और डिफेंस के साथ साथ मैं फोकस करूंगा मैन्युफैक्चरिंग पे, फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम चाइना जैसी अगर कंट्रीज़ को देखें कि चाइना ने पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। वो कभी भी आके कह देता है कि चांदी बंद नहीं देंगे बाहर दुनिया के देश को, और एक रीज़न निकाल के ले आता है कि भैया हमको खुद को ज़रूरत है, इसलिए हम बाहर के देशों को नहीं देंगे, और दुनिया को मानना पड़ता है। चाइना जैसे देश की मोनोपोली का कारण सबसे बड़ा ये है कि चाइना कंज्यूमर तो है, लेकिन साथ में प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है। वो भारत के साथ समस्या ये है कि भारत कंज्यूमर तो है,
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत है, लेकिन भारत कंज्यूमर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर नहीं है। लेकिन सर चाइना की सप्लाई लाइंस तो अमेरिका खराब कर रहा है। मैं यहाँ पर संजय जी के पास चलूंगा। संजय जी, जो बड़ी अंग्रेजों के जमाने का वो डायलॉग है शोले का, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। एफडीआई बाहर जा रहा है, स्टॉक मार्केट से एफआईआईज बाहर जा रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक मार्केट चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है? और फिर आगे आपको मैं स्टॉक मार्केट स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में रहता है इट्स अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। हमने बचपन में पढ़ा था, हालांकि मैं एग्री और डिसएग्री। दूसरा सवाल जो मेरा आपसे वो इसी से मिलता जुलता है। एक इकोनॉमी जो सेविंग इकोनॉमी थी भारत की, वो अब धीरे धीरे क्रेडिट इकोनॉमी में जा रही है, डेट इकोनॉमी में जा रही है, वो भी मिडिल क्लास के लिहाज से। दोनों बहुत अलार्म है। योर टेक, क्या होगा इसमें? देखिए सर, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा वो है कि क्रेडिट इकोनॉमी हो रही है, तो मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। पिछले 5 साल में पर्सनल लोन्स की जो ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है, मतलब विच इज 14 to 15% CAGR। और उसमें भी जो सबसे बड़ी कैटेगरी निकल के आई है वो आईफोन नहीं है, वो ट्रैवल हो चुका है और कॉन्सर्ट्स हो चुका है। तो आजकल के जो जेनजी है वो ट्रैवल कर रहे हैं और कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हैं, इवन फॉर हेल्थ, उधार लेके। हेल्थ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अगर आप ये देखें तो यानी कि लोगों की मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं लाइफ से कि भाई यू ओनली लिव वंस। तो मैं उन लोगों को कहता हूं बेटा, अगर तुम ज्यादा जी गए ना तो तुम्हारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मतलब फिर यू ओनली लिव वंस वाला सिस्टम चलेगा नहीं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच वी हैव टू फोकस। आप देखें, यूएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी की डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कह दिया कि जो आप 36% 40% साल का ब्याज लेते थे, अब आप 10% लोगे। इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड के ब्याज जो है वो 42% पर एनम के हिसाब से है। तो अगर इंडिया भी ऐसा कोई रेवोल्यूशन लेके आ जाए जहां क्रेडिट कार्ड, आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी? बिकॉज हमारी सेविंग इकोनॉमी है। करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो लोगों के पैसे हाथ से जाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा, लोगों को पता भी नहीं चलता है। ओके, और सेकंड पार्ट जो आपने एफडीआई की बात करी, तो मैं आपको एक एफआईआईज की बात करी, मैं इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। पिछले 10 साल में, 8 से 10 साल में एफआईआईज ने टोटल 10 लाख करोड़ मार्केट से बाहर लेके गए हैं, 10 लाख करोड़। और उतना ही पैसा इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है। मतलब सिर्फ चला रहा है। एसआईपीज चली हैं जो आज महीने की करीबन 25 से 30 हजार करोड़ हो चुकी हैं, साल की 3-4 लाख करोड़ के रेंज में है। पर अगर उनको मेरा भी काफी देखती रहती है अपनी एसआईपी पर अगर उनको अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिले तो वो भी छोड़ के जा सकते हैं। और इंडिया में अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उनको एफआईआई एफडीआई से ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉरेन इनकम पे। अगर फॉरेन इनकम बनानी है तो सबसे बढ़िया तरीका है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म पे भी फोकस करें तो डॉलर घर पे आता है, और जब डॉलर घर पे आता है वो जाएगा ही नहीं बाहर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि हमें compete करना है दुनिया में, हमें ये तमाम ट्रेड डील्स जो करनी है, जो मैं पहले भी सवाल कर रही थी, इसको बूस्ट करने के लिए और क्या किया जा सकता है ताकि कॉम्पिटिटिव हो हम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल R&D पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोकस की जरूरत है। सेकंड, टैक्स ब्रेक्स के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्रमोटर्स को। आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिवाइज करके उनसे लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। Agree. तो 8 साल 10 साल के भी आपको उनको ऐसे ऐसे गिफ्ट्स देने पड़ेंगे कि जो सिस्टम में 5-10 साल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको और भी अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स मिले। थर्ड, उसके लिए जिस तरीके से अभी मार्केट्स ओपन की जा रही है, यूके के साथ ट्रेड डील हो रही है, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है, उनके लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी सरकार को करना पड़ेगा। तो ये 3-4 बड़ी चीजें करेंगे तो आई एम श्योर। थोड़ा सा टेक मैं यहाँ पे लूंगा। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और एक खबर आ जाए कि ईरान पर हमला हो गया, जनरल कुलकर्णी सर, उसके बाद क्या होगा? ईरान के ऊपर हमला हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि तेल के ऊपर जो टोटल कंट्रोल है वो ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है किसी को भी तेल ना बेचे, सिर्फ अमेरिका के इशारे पर जिसको वो चाहे उसी को बेचे, और इससे असर होगा चीन के ऊपर। मुझे लगता है होपफुली ये कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि चीन के धीरे धीरे जो एनर्जी रूट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। वेनेजुएला के ऊपर ज़बरदस्त पाबंदी, जहाँ से 80% तेल चीन उठाता था, वहाँ पे ईरान के साथ, जिसके साथ $400 बिलियन का 25 साल का डील है, उसके ऊपर रुकावट। फॉल्स इन लाइन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि फॉर मी द न्यू गोल्ड इज फ्यूल, इज गैस। ये उनका पहली स्पीच में था। अमिताभ जी, आपके पास हम बड़ी देर से नहीं आए, क्विक टेक सर। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, दे आर क्लोजली लिंक्ड, नॉट क्लोजली लिंक्ड बट इंटरट्विन्ड। अभी के हालात में आपको क्या लग रहा है? हमारे लिए 2 टर्निंग पॉइंट रहे हैं सर, और ये जहां पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ। पहला टर्निंग पॉइंट एप्पल की भारत में मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा टर्निंग पॉइंट ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर में और ब्रह्मोस की भारत में परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको लगता है
You got it what I'm saying? Yes. Your take, sir. देखिए 80,000 करोड़ का एप्पल का मार्केट भारत में है। हम 80,000 करोड़ रुपए का एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं इंडिया में। हर साल 10% उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी जो बाहर हम अब तक बाहर प्रोड्यूस होता था, हम प्रोड्यूस करके खुद कंजम्पशन करें, हमारी कंजम्पशन बढ़ी है। दूसरा, मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ यहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे जब से अमेरिका के में फॉरेन एडमिशन्स कम हुए हैं, 30% भारतीय जो जाते थे विदेशों में, खासकर अमेरिका में, वो अब यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको रोकें और अपने कंट्री में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करें, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। तीसरी बात, सबसे जो तेल का हमेशा एक अनिश्चितता बनी हुई है दुनिया में, अनिश्चितता रहेगी भी, उस तेल के मार्केट को हम कितना उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बस 9 मिनट बाकी हैं, बस 9 मिनट सुमेरा, बस 9 मिनट। लेकिन क्योंकि हम अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है, हम इसे कह भी रहे हैं कि देखिए ये युद्ध काल का बजट है। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दुनिया में ये अनिश्चितता अभी और कुछ समय तक बनी रहने वाली है। किस तरह की स्थिति आप दुनिया में अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप इसी तरह से बयान देंगे, उनकी जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो दुनिया को प्रभावित कर रही है। किस तरह के हालात आगे आप देख रहे हैं जिससे भारत को जूझना है? मुझसे पूछा? जी सर। जी सर। नहीं, देखिए बिल्कुल इस आपके के लिए पैसा दरअसल बचेगा कितना? जी। अब प्रवीण सर, आपसे हमारा जो संबंध है वो लंबा है, क्योंकि कब जो बजट हम लोग बहुत पेश कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं हम लोग। सर, बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये बड़ी एक जो है रोचक जानकारी रहती थी। हालांकि अब जो है आपके जो है थाली की सब्जी से लेकर अगर आप स्मार्टफोन तक अगर सब चीज़ अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो चीज़ों की जो दाम है वो जीएसटी काउंसिल तय करती है, अब ना कि वित्त मंत्री तय करती हैं। लेकिन बजट में जो है इंपोर्ट ड्यूटी के जो है घटने और बढ़ने का जो सिलसिला है वो पता चल पाता है। और इसी से बजट के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो मामला है, इसी कहानी को हम जोड़ना चाहेंगे आपसे, इंपोर्ट ड्यूटी वाले मामले को भी आपसे समझना चाहेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर सर, कमोडिटीज़ का रुख कब करना चाहेंगे? पिछले बार हम लोगों ने देखा था सर कि जो 15% से जो है सीधे 9% की गिरावट कर दी गई थी सरकार के द्वारा और 6% के आसपास कर दिया गया था सोने चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी जो लग रही थी। अब उसमें गिरावट की बात कही जा रही है। इस बजट से कहा जा रहा है कि उसको 6% से घटाकर जो है 4% कर दीजिए। आप कितना सहमत हैं और क्या ये सरकार के लिए फीजिबल होगा करना? नहीं, देखिए इसमें अब दो एक बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं विशाल जी। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो जिस तरह का क्रेज़ आपको पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दिया है गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, अब तो सिल्वर को भी लेके, और केवल ऐसा नहीं है कि डिजिटल जो तरीके हैं जी, सोने और चांदी में पैसा लगाने की, ETF या डिजिटल गोल्ड को खरीदने के, उनमें ही है। फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदने का भी सिलसिला वैसा ही चल रहा है। हर साल 700-800 टन का गोल्ड का इंपोर्ट भी भारत कर ही रहा है। अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है सरकार तो फिर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि आप ज़्यादा डॉलर बाहर चुकाएंगे, आपका फॉरेक्स रिजर्व फिर कम होगा, फिर फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, रुपए पे फिर प्रेशर पड़ेगा। सरकार ये चाहती नहीं है जी। दूसरी तरफ मसला ये है कि आप इंपोर्ट कम करने के लिए अगर आप ड्यूटी बढ़ाते हैं तो वहाँ मसला फिर चला जाता है कि लोग स्मगलिंग करने लगते हैं, दूसरे तरीके अख्तियार करने लगते हैं कि किसी दूसरे तरीके से गोल्ड को फिर इंडस्ट्री ये भी तो तर्क देगी सर कि ऑलरेडी इतना महंगा है सोना, जो आम निवेशक है वो खरीद नहीं रहा है, आप इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा देंगे तो फिर लोग और डी इंसेंटिवाइज हो जाएंगे, ये भी तो तर्क आएगा। बिल्कुल, ये बात भी सही है। और सिल्वर को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिल्वर की चूंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अचानक से ऐसा लगा कि पूरी दुनिया को चांदी की ज़रूरत है जी। और अभी 2 दिन के क्रैश आया जी, तो 1980 वाली याद जो है ताज़ा हो गई सर। उस समय 90% का डेंट पड़ा था। अभी मेरी बात हो रही थी कमोडिटी एक्सपर्ट से और हूबहू सर 1/3 तो आप मान ही लीजिए 30% का गिरावट एक दिन में। 1 लाख रुपए की जो गिरावट आई है चांदी में, लोग जो है जिस तरह की वॉलेटिलिटी जो देखने को मिली, हम लोग कई बार डिस्कस किया है हम लोगों ने, और ये बात को उठाने की कोशिश की है कि ऐसा अचानक चांदी में क्या हुआ है। अचानक से क्या EV से लेके आपके आपके बाकी के जो इंडस्ट्रियल यूज़ है चांदी का, वो क्या अचानक से बढ़ गया है आपका सिल्वर का, चाहे गैजेट्स हो या बाकी इंडस्ट्रीज़ हो, और इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। और वही चीज़ हुई कि एकदम से प्राइस स्लम्प हुए तो अब ये लग रहा है कि क्या इन सब इंडस्ट्रीज़ की डिमांड खत्म हो गई।
अब क्या केवल काजू कतली पे चांदी का बर्फ लग के आ रहा है, वहां तक ही डिमांड रह गई, इतनी डिमांड। तो ये क्या ऐसी आर्टिफिशियल डिमांड थी, आर्टिफिशियल एक बबल क्रिएट हुआ चांदी में और फिर एकदम से क्रैश आया, जिसकी वार्निंग हम लोग लगातार दे भी रहे थे कि चांदी में थोड़ा सतर्क होकर रहने की जरूरत है। जी अब सर थोड़ी देर में जो है लोकसभा में जो है बजट पेश हो जाएगा, मात्र 5 मिनट का जो है समय वो मात्र जो है शेष रह चुका है और मार्केट का क्या अपडेट है वो जानने, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था सर कि हल्की फुल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, अब वो अब जो है तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। निफ्टी जो है 25,380 के आसपास कारोबार कर रहा है, 60 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक भी जो है 150 पॉइंट्स चढ़कर 59,758 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो सर सबकी जो निगाहें हैं, 9वीं बार जो है बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमन, तो देखना होगा कि मैडम का जो पिटारा है उससे क्या कुछ सामने आता हुआ दिखेगा। अब कुछ सर सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे जो हम चर्चा करना चाहेंगे, प्राइवेट जो चैलेंजेस है सर उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बात सामने आती है कि वो नहीं हो रहा है, मैं एक डेटा पढ़ रहा था सर, कहा जा रहा है कि ये 1 साल 2 साल की घटना नहीं है, लगातार अगर 10 साल पहले का भी अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उस समय से कहा जा रहा है कि जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। लोगों के पास तो पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा जो है देश में नहीं लगा रहे, विदेशों में वो पैसा लगा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को और ये कितना चिंताजनक है इंडियन इकोनॉमी को लेकर? प्राइवेट कैपेक्स को लेकर तो सरकार चिंतित है, सरकार कोशिश भी तमाम कर रही है। अर्थशास्त्री भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि साहब सरकार को फोकस ये करना चाहिए कि प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा मिले। नीति आयोग में जब सरकार की बैठक हुई अर्थशास्त्रियों के साथ, नीति आयोग के मेंबर्स के साथ, वहाँ पे भी इस बात को उठाया गया कि सरकार को अब अपना कैपेक्स छोड़कर जी कमान जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपनी चाहिए कि वो अब आगे आएँ और आगे आकर जो है पैसा लगाएं, उनको अवसर मिलना चाहिए जी। लेकिन उसमें मसला ये है, सरकार मान लीजिए अभी कैपेक्स सरकार ने 11,21,000 करोड़ रुपए रखा जी। कहा जा रहा है सर कि इस बार 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, अब 10-15% का इजाफे का मतलब है 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कैपेक्स का पहुंचना जी। अब सरकार अगर अपना खर्चा रोक दे, सरकार कैपेक्स पे खर्च ना करे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ना आए, क्योंकि ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है उसमें प्राइवेट कंपनियां अपने हाथ में कैश रोककर चल रही हैं, उनको लग रहा है कि ये एक्सपेंशन का शायद मुफीद वक्त नहीं है, पहले दुनिया भर के हालात थोड़े संभले। क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया गया कि 10 से 20% चांस इस बात के हैं कि सब प्राइम क्राइसिस की रिसेशन आ सकता है और 2008 जैसा आ सकता है। तो क्या कंपनियां इस बात के, दुनिया भर में अगर आप कंपनियों को देखेंगे जो एआई की वजह से जो एक पूरा डिसरप्शन क्रिएट हुआ है उसमें दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं। अभी हाल में अमेजॉन ने ऐलान किया कि वो 16,000 और आईटी सेक्टर की आप बात कर रहे हैं सर, आईटी सेक्टर का हाल तो बहुत बुरा, जैसा कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मार पड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा सर अब भारत की अगर जो बजट में एआई को लेके विशाल जरूर कुछ बड़ी फोकस हो सकते हैं सर, लेकिन सर भारत की 5 सबसे बड़ी अगर जो आईटी कंपनियां हैं, जो दशकों तक कहा जाता था सर कि हर तिमाही जो है हजारों जो है नौकरियां दिया करती थी, उन्होंने 2025 के पहले 9 महीने में सर बहुत ही मतलब तो आप समझिए डरावने वाला आंकड़ा है, 9 महीने में मात्र कुल मिलाकर जो है सिर्फ 17 कर्मचारियों को ही जो है ऐड कर पाई है बढ़ोतरी हुई। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये रहा, मात्र 17, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आपको उसको कोट कर रहा हूं। इसके अलावा सर जो जेपी मॉर्गन का एक कोट है उसको मैं आपसे साथ जो है साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो कहा गया कि जिस तरह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी तो की जा रही है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं हो पा रहा है उसका जो है समय वो 12% से भी कम के आसपास है टू द जीडीपी। अगर इसका रेशियो से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कहा गया। तो दोनों बातों को हम समझना चाहेंगे सर आपसे कि नौकरियों के फ्रंट पर सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और तमाम तरह की, जिस तरह से आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी के इंटरवेंशन से नौकरियां खोने का डर हो रहा है, तो इन सब फ्रंट को कैसे टैकल करेगी सरकार? नहीं, सरकार के सामने जाहिर तौर पर चुनौती हो। देखिए हम लोगों ने इस बात पे भी चर्चा की थी जब बजट से पहले एक बार चर्चा कर रहे थे अभी हाल में जी कि नौकरियां पैदा करना सरकार के लिए अब से चैलेंज नहीं रहा जी, चैलेंजिंग नहीं रहा। ये लंबा वक्त हो गया, तब से सरकारों का सिरदर्द एक बड़ा ये रहा है कि देश में आबादी बढ़ी है, युवा बढ़ी है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जी, लेकिन वो कामकाजी नहीं है, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, वो उनके पास नौकरियां नहीं है, काम करने के लिए साधन नहीं है कि आखिर वो करें क्या। तो ये एक समस्या जिसको लेके सरकार 2024-25 का जब बजट लेके आई तो सरकार ने घोषणा की थी जुलाई में कि हम साहब जो है वो 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो है इंसेंटिव स्कीम लेकर आई सरकार।
1 करोड़ सरकार ने कहा कि हम इंटर्नशिप देना चाहते हैं जी। और इंटर्नशिप देने का ये रहा कि जब 18 महीने गुजरे तो मैं देख रहा था कहीं सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही इंटर्नशिप क्रिएट हुई जी। इससे पहले सरकार NSDC लेकर आई थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल लेकर आई थी, वहाँ पे सरकार ने कोशिश की कि लोगों को स्किल एनहेंसमेंट हो, उसमें सरकार ने इंसेंटिव्स दिए जी, जो लोग स्किल प्रोवाइड कराते हैं जी। लेकिन ये 2 बड़े जो प्रोग्राम थे यहाँ सरकार फेल हुई जी। तो आपकी सारी बातों का लब्बो-लुबाब अगर मैं देखूं प्रवीण सर, तो मेरा ध्यान जो है अब युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा कि युवाओं को लेकर जो है इस बजट में क्या कुछ नहीं, बात जो है ये नहीं है। देखिए, ऐलान करना अलग चीज है, और ऐलान का वो लागू कैसे होंगे वो देखना जरूरी है। सर माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। अब संसद का जो लाइव फुटेज हमारे पास सामने आ चुका है और देखिए जो है संसद में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है वो बजट को पेश कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि क्या बातें सामने आ रही हैं। अब हम लोग जो है सुनना चाहेंगे कि क्या बजट में ऐलान हो रहा है। On the table, a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3. Explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards
becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity,
and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation,
and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure.
During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers,
an allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps
to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3.
upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, girls' hostel will be established in every district. To promote via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a 2-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential
an opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A, credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture.
to diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She-Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She-Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care.
There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. And northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates
Of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities, to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number.
to address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction
to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards
the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1%
to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. While calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention
for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments.
I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term
modular courses, and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming, and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. One girls' hostel will be established in every district. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors.
3, creating champion MSMEs. 4, delivering a powerful push for infrastructure. 5, ensuring long-term security and stability. And 6, developing city economic regions. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul. तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो अपने जो बजट भाषण को संबोधित कर रही हैं, तमाम फैक्टर्स को वो गिना रही हैं और बता भी रही हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसका इंतजार जो है सैलरीड और मिडिल क्लास कर रहे थे। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या निकला है पिटारे से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रदीप मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर उड़ान ग्रुप के। सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे 9 पर।
थैंक यू विशाल जी। सर, सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क जानना चाहते हैं, बजट की जो अभी तक की जो आप भाषण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको कैसा देखा आपने? क्या इट इज मीटिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस या कुछ जो है लैक्यूना आपको भी नजर आ रहा है? देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशन थी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, Exactly. क्योंकि लग्जरी हाउसिंग तो बन रहा है पर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन पा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं उसकी रीडिफाइन करने की ज़रूरत थी, उसी डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत थी। 45 लाख का जो कैप है वो कहीं हद तक मेट्रो सिटीज़ में लॉजिकल नहीं बच जाता। कीमतें बहुत बड़ी है, लैंड कॉस्ट भी आप देखेंगे तो 4 to 5 टाइम्स ऊपर चली गई है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है, तो उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का बनना मुश्किल हो गया। अब लग्जरी डेवलपर की भी मजबूरी है, क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो लग्जरी हाउसिंग करके उसको मीट आउट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को जी। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का ना आना ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है। इंडस्ट्री तब चलती है जब उसके अंदर सभी चीजें चलती है। मतलब मैं कहूँगा ऑटो भी चले, रियल एस्टेट में लग्जरी भी चले, अफोर्डेबल भी चले, तब उस इंडस्ट्री का चलना कहलाएगा। मैं आपको रोक रहा हूं सर, लेकिन जो प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशंस का जो दौर चला था उसको मैंने बहुत ही बारीकी से कवर भी किया था। उस समय भी ये मांग आ रही थी, कहा जा रहा था कि ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के जो फ्लैट्स हैं वो तो मिनटों में बिक जाते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखते हैं। लेकिन 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख के आसपास के घरों की जो बिक्री है वो थोड़ी सी जो है स्थिर नजर आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि घर जल्दी बिक रहे हैं और जो सेल्स अफोर्डेबल की कम हो रही है, इसका मेन वजह है सप्लाई कम आ रही है। अगर सप्लाई ही कम होगी तो आपको नंबर्स दिखेंगे कैसे? अब सब तो लग्जरी की दौड़ में है, सबको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो लग्जरी बन रही है और लग्जरी बिक भी रही है। मार्केट में इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर, एंड यूजर सब हैं, तो इस कारण से लग्जरी में सेल्स आपको दिख रही है। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन रही है, सप्लाई नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई कैसे आए। जी जी। तो चलिए सर, अब इंफ्रा पर जो है रिस्क गारंटीड फंड की जो बात सामने आ रही है, उस बात को भी जो हम आपसे जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला क्या है सर इंफ्रा को लेकर जो है? देखिए, गवर्नमेंट लोन के अगेंस्ट में गारंटी लेती है जी। अब अगर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो इंफ्रा डेवलपमेंट, जैसे हाईवे है या मेट्रो है, इनमें डेवलपमेंट होती है, मतलब लोग सामने आते हैं और प्राइवेट डेवलपर्स भी इनको बनाते हैं, तो वहाँ चीप रेट के ऊपर चीप इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलना और प्राइवेट एंटिटीज का घुसना, ये अपने आप में डेवलपमेंट लेके आता है। सर, इसको अगर मैं व्यूअर्स के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझूं तो मान लीजिए जैसे हम लोग का जो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट था जो फ्रॉम गुजरात टू बॉम्बे बन रहा था, उसमें जो है जापान से पैसा आ रहा था बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। आप क्या वैसे ही बात कह रहे थे? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, जब प्राइवेट डेवलपर्स आएंगे, देखिए इंडिया में भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें क्यों पैसा बाहर से लेना पड़ रहा है? जब मैं कह रहा हूँ प्राइवेट एंटिटीज को एंट्री कराई जा सकती है और बेसिकली लोन अगर कहीं से आ रहा है और लोन की गारंटी भी ली जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत रियल एस्टेट में यह है कि इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है। जब इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है तो इसमें हमेशा से इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को भी रहता है कि शायद पैसे की रिकवरी ना हो पाए। जब गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे उसकी सिक्योरिटी होगी, गारंटी होगी, तो वहां पर प्राइवेट डेवलपर अच्छे से इंफ्रा डेवलप कर पाएंगे और उससे पूरे एरिया का विकास होता है। पिछले 5-7 सालों में देखा गया विशाल जी कि इंफ्रा ने ही रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट किया है, तो इंफ्रा का रोल पिछले 5-7 सालों में बहुत रहा है और आने वाले सालों में भी इसका दिख रहा है। ओके। अब सर, जो सबसे जो बड़ी बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स के फ्रंट पर जो है मिडिल क्लास को जो है निराशा हाथ लगी है कि कोई स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया सर। हालांकि हम लोग मान रहे थे कि पिछले बार भी बजट में हम लोग मान रहे थे कि अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी, तो 12 लाख, अगर आप सैलरीड है तो 75,000 और ऐड कर लीजिए तो 12-75 के आसपास की थी। उसके बाद जो है अच्छा खासा जो है जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा था। लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है हाउसिंग सेक्टर्स में घुस रहे थे, रियल एस्टेट में जो है पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब इसमें किसी भी तरह का जो है चेंज ना होना, ये कितना दुखद आप मान रहे हैं या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ेगा रियल सेक्टर को? देखिए विशाल जी, पिछली बार बहुत कुछ मिल गया था, ठीक है, अब हर बार आप उम्मीद इतना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो जी, तो एनआरआईज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें टीडीएस अपने आप में टीडीएस एक सब्जेक्ट होता था जी, तो उसको 10 नंबर बायर को लेना पड़ता था, तब वो टीडीएस डिडक्शन पॉसिबल हो पाता था। अब उसको इजी कर दिया गया है, तो ये अपने आप में एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कैसे लाई जाए उस पे वर्क जरूर किया है जी। अब हमारे साथ डॉक्टर अजय दुआ साहब जुड़ चुके हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद जी। जी सर, ओवर टू यू। आपसे फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर अब तक की बजट को जो ऐलान हुआ? तो
अब तो बजट पूरा हो गया है प्रेजेंटेशन जी जी वो फाइनेंस मिनिस्टर महोदय की का भाषण समाप्त हो गया है और उन्होंने बजट को कंसिडरेशन के लिए मूव भी कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है और सबका कुछ ना कुछ नहीं भी दिया गया। तो इस बजट में प्रयत्न किया गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर महोदय के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसको कैसे बांटा जाए जिससे निराशा भी ना हो, पर ये भी रह गया है कि सबका जिसे कहते हैं अपेक्षा के अनुसार में वस्तुएं नहीं या जो वो अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं दिया गया। मैं इनकम टैक्स तरफ में बहुत सरकार ने प्रोसीजरल पॉइंट्स बहुत बनाए हैं, बट कोई रिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड लोगों के लिए होता है उसमें अपेक्षा थी कि 75,000 से शायद ₹1,00,000 कर दिया जाए, वो नहीं किया गया। कोई भी रेट में टैक्स रेट का जो एप्लीकेबल टैक्स रेट चल रहे थे उसमें किसी स्लैब में या किसी ओवरऑल ग्रुप में या एग्जामिशन लिमिट नहीं बढ़ाई गई। पर ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जहाँ पे भी सहूलियत दे सकते थे जैसे टीडीएस में किया गया है, जैसे किया गया है पेनल्टीज़ के ऊपर कि आप डिक्रिमिनलाइजिंग किया गया है इनकम टैक्स के रिटर्न्स में अगर कोई गैर असेसमेंट कोई मिस स्टेटमेंट की हो इत्यादि, इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के उनको ईज़ ऑफ जिसे कहते हैं ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स का जरूर सरकार ने व्यवस्था की है। सिमिलरली मैं बोलूँगा जो हमारे कस्टम्स ड्यूटी है निर्यात आयात के ऊपर उसमें कुछ रेट्स जरूर कम किए गए हैं। उसमें भी कुछ प्रयत्न किया गया है कि प्रोसीजरल मैटर्स में जिससे थोड़ा ईज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए उसका प्रयत्न किया गया है। और साथ साथ उधर ये भी किया गया है कि 2-3 विषयों में जरूर सहूलियत है। एक है कि जो आइटम न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए आएंगे पावर वगैरह आजकल हम बात कर रहे हैं कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स की न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कुछ सहूलियतें दी गई हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की। डेटा सेंटर के और जीसीसीज पे जो हिंदुस्तान में भारतवर्ष में आजकल आ रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ भी दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर को जो क्लाउड सर्विसेज क्रिएट करेंगी और जिसमें ये जो डेटा सेंटर्स हिंदुस्तान में हैं उसको उसके थ्रू जो डेटा वहाँ क्लाउड सर्विसेज में भेजा जाएगा उस काम के ऊपर इंसेंटिव्स रखे गए हैं टैक्स के। तो मैं और कुछ टेक्नोलॉजी के इस तरफ से सरकार ने प्रयत्न किया है कि नई टेक्नोलॉजी आने के लिए सरकार उसके अंदर भी जो लाने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको कैसे सहूलियत दे सके। तो मैं कहूँगा कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था सरकार ने इतना बड़ा वाइड कैनवस पे बहुत चीज़ें करने का प्रयत्न किया है, कुछ पूरे रूप से कर पाए, कुछ बस उसका ध्यान आकर्षित किया। जैसे कमेटी बना दी गई है बैंकिंग के लिए कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग विभाग में या बैंक्स के अंदर क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसको डिटरमिन करके आगे लाने का। तो और कुछ पे थोड़ा एक्शन ले लिया है। तो यही मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क रहे। लेकिन अजय सर आपसे बजट से पहले भी मेरी साथ आपकी चर्चा हुई थी, लेकिन 8th पे कमीशन सैलरीड क्लास को करोड़ों लोगों की नज़र जो थी वो बजट को लेकर थी, वहाँ कोई ऐलान नहीं होता हुआ दिखा सर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? 8th पे कमीशन सैलरी पेंशन में जो बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी उसको लेकर कोई भी तरह की बात नहीं की गई। अगर विशाल जी आपको याद हो जाती 2-3 रोज पहले ही हमने चर्चा की थी जी। मुझे नहीं लग रहा था और मैंने स्पष्ट रूप से कहा भी था कि शायद पे कमीशन के बारे में जिक्र भी ना करें। अगर कोई जिक्र करेंगे तो वो इंटरनली पे कमीशन को कह सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट 14 महीने में नहीं 12 महीने में हमें दे दीजिए आप दिसंबर आखिर तक। अगर वो दिसंबर आखिर तक दे सकते हैं तो फिर जो बैक पेमेंट्स करनी पड़ेगी इफेक्ट का तो रहेगा ही जनवरी
2026 से जब कभी कमीशन की रिपोर्ट आए तो वो अगले साल के बजट में उसकी प्रोविजन कर सकेंगे। और क्या उनका रवैया रहेगा कि वो कैसे ट्रीट करेंगे पेंशन के मुद्दे को, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कि ये सब चीज़ें वो पे कमीशन ही तय करेगी। फाइनेंस कमीशन में ये बजट में आने की उसकी आवश्यकता नहीं थी। जी अजय सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो निराशा हाथ लगी है वो मार्केट को लेकर है। एसटीटी की जो दर है उसको जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है। फ्यूचर्स पर जो एसटीटी है वो 0.00 से बढ़ाकर जो है 0.05 कर दिया गया। इसके बाद जो है मार्केट्स जो है क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, जब मार्केट 800 पॉइंट, थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन था, 250 पॉइंट और या 350 पॉइंट निफ्टी डाउन था। ये जरूर मार्केट को उसके फ्यूचर्स का मार्केट काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको आपने 2.5 गुना 12.5% से 50% पे कर दिया है, तो 4 गुना ही पूरा बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स को जरूर फर्क पड़ता है एसटीटी का। पर मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मार्केट ने थोड़ा जो निराशा दिखाई है वो एक एसटीटी के ऊपर ही नहीं है, वो है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो उम्मीद कर रहा था उसके ऊपर कोई कंसेशन नहीं है। लोग कह रहे थे कि 2018 का पिछला जो वृद्धि किया गया था या कमी किया गया था वो 7 साल हो गए हैं, कोविड से वो पहले का था। अब वो रेट को रिवाइज करने की अपेक्षा कर रहे थे, कारण प्राइवेट सेक्टर को अगर फैसिलिटेट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो शायद वो सरकार उस रेट्स को कम करेगी। वो नहीं किया गया। पर्सनल टैक्सेस में नहीं किया गया, जिससे कंजम्पशन बढ़ने का, आप अगर गरीब आदमी के हाथ में या एवरेज आदमी के हाथ में अगर आप इनकम देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंजम्पशन पे कर देता है, खर्चा सेविंग्स कम करता है। वो भी नहीं किया गया। तो ये मार्केट थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लेके जो भी अपेक्षा कर रही थी वो इतना नहीं किया गया। एग्रीकल्चर पे किया गया कि वैल्यू एडेड नई चीज़ें, कोकोनट या आप कोको, कैशू नट, ऐसी चीज़ें का और मेरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ एम्फसाइज किया गया। पर ये सब मार्केट के लिए इंस्टेंट फायदे वाली चीज़ नहीं थी। ये सब डिज़ायरेबल उचित है। इनका प्रभाव भी जो इकोनॉमी के ऊपर या कृषि समाज के ऊपर पड़ेगा उसमें टाइम गैप रहता है 2-3 साल का। इसलिए वो मार्केट ने कोई अपना पॉजिटिव उसको बजट को कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया। एक लास्ट सवाल अजय सर, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत कीमती समय है। एक लास्ट सवाल, क्या सर बजट के बाद भी कोई बड़े ऐलान की उम्मीद की जाए मोदी सरकार से? जी, जो वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस हम चला रहे हैं। जी हाँ, रेलवेज का तो उन्होंने कर दिया, वो मुझे बताना चाहिए था। रेलवे कॉरिडोर्स तो बहुत घोषित किए हैं, वो अच्छा है लॉजिस्टिक्स के रूप के लिए, पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए। और आप सरकार ने जो कैपेक्स पिछले साल 10.5 लाख करोड़ है, इस साल 12 लाख करोड़ की बात हो रही है। कुछ मिला के 12-13% वृद्धि की गई है। और उसमें रोड्स, हाईवेज जिसे कहते हैं, हाईवेज, रेलवेज को महत्व रहेगा, कारण कोई नया सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया सरकार ने कि हम और किस चीज़ पे ये एम्फसाइज करने वाले हैं। जरूर सरकार ने कहा है हम 40,000 करोड़ रुपए के आप प्रोविजन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में इसको देने का। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मैं जो बात कर रहा था वो ऐसी चीज़ें थी। पर ये मैं तब भी कहूँगा इन सबको ये जैसे इंक्रीमेंटल कहते हैं कि पहले स्कीम के लिए हमने एक्स दिया था, अब हम एक्स को वाई और दे देंगे, पर एक्स का डबल एक्स नहीं किया या एक दो नई स्कीम डालने का। डेल्टा जिसे इंक्रीमेंटल कहा जाता है कि ग्रेजुअली आप बढ़ा रहे हैं। तो मार्केट शायद इन चीज़ों की अपेक्षा कर रही थी, नहीं मिलने पे वो ठीक हो जाएगी मार्केट। सरकार भी जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा, 4 स्टेट्स में, चारों महत्व के स्टेट्स हैं, शायद उससे पहले
कुछ और भी अनाउंस कर सकती है। और अगर जनरली मार्केट का ऐसा ही रहा कि मार्केट ऊपर नहीं चढ़ती, वो भी सरकार को उसका नोट करके हो सकता है कि कुछ और स्कीम्स भी आ जाएं। पर नॉर्मली जब तक बजट पास नहीं होगा, सरकार कोई नई घोषणा नहीं करेगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला। मनी 9 के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब रुक करेंगे फाउंडर साहब का। सर, आप बता रहे थे कि रिसाइकलिंग ऑफ एसेट्स को लेकर भी जो है बड़े ऐलान किए गए हैं इस बार के बजट में। उस मामले को भी आप समझाइए। देखिए, अभी पूरा फाइन प्रिंट नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही है वो ये कि रीट को पुराने प्रोजेक्ट्स में भी लाया जा सकता है। क्योंकि जब पुराने प्रोजेक्ट्स में रीट आएगा तो उसकी लिक्विडिटी फास्ट हो जाएगी। लिक्विडिटी फास्ट होगी तो उससे नए प्रोजेक्ट्स, जब पैसा वापस आएगा मार्केट में तो उससे नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगेगा। तो ओवरऑल ये इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पर Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर भी इंफ्रा को लेके बूस्ट किया जा रहा है। जहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, छोटे सिटी जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, इनमें भी इन्विट और रीट लेके आया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी डेवलपमेंट्स वहाँ पर आएंगी। तो यहाँ इन शहरों में भी रियल एस्टेट एक अच्छा बूम करेगा। देखिए, रियल एस्टेट अकेला सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, नहीं सर। इसकी एंसिलरी इंडस्ट्री जो इसके साथ की बैंकिंग बहुत सारे हैं और बहुत सारे इस पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो जब कोई घर खरीद रहा है या घर बना रहा है तो फायदा सबका हो रहा है। तो इसका फायदा मेरे को लगता है छोटे शहरों का फायदा पूरी इंडस्ट्री को, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होने वाला है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और देख रहा हूँ। प्लीज बताएं सर। टेम्पल सिटीज पे भी बात की गई है, जैसे अयोध्या या वृंदावन की टेम्पल सिटीज हैं, इनको लेके भी यहाँ पर गवर्नमेंट अब सीरियस दिख रही है। ये भी गवर्नमेंट के एजेंडा में, इसको भी अच्छा डेवलप किया जाएगा। साथ में मेडिकल हब्स और फ्रेट कॉरिडोर ये बनाने की भी बात की जा रही है। तो इससे मेरे को लगता है कि बूम पूरा हेल्थ केयर हो या टूरिज्म सेक्टर हो या लॉजिस्टिक हो, इन सब में अच्छी खासी डिमांड आएगी। और इवन साथ में होटल्स की डिमांड भी आएगी, हॉस्पिटैलिटी की डिमांड आएगी, वेयर हाउसेस की डिमांड आएगी। ये ओवरऑल सभी सेक्टर्स को इसमें इम्पैक्ट होगा और सबका विन विन सिचुएशन में यहाँ मुझे रहते दिख रहे हैं। ओके सर। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। कहा जा रहा है कि इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी टू सिलीगुड़ी, इसको भी डेवलप करने की बात कही जाएगी। तो इन सेक्टर्स में भी सर का कहना है कि यहाँ जो है रियल एस्टेट सेक्टर को है जो अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको या ऐलान जो है वो होता हुआ दिखेगा। इंफ्रा पर जो बड़े खर्च की बात कही जा रही थी, जो अभी हम लोग एक्स ब्यूरोक्रेट साहब से भी पूछ रहे थे कि पहले जो था पिछले साल 11.2 लाख करोड़ के आसपास का जो है आवंटन किया गया था, अब जो है 12.2 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स जो है वो तय किया गया है। इसके अलावा भी और तमाम सेक्टर्स को लेकर, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहा गया है कि भारत अपना जो है सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। तो जिन 6 क्षेत्रों पर जो है सरकार का फोकस रहा है वो एक है रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जिसको अजय दुआ साहब भी कहते हुए दिख रहे थे कि नए और जो है जरूरी क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन की जो क्षमता उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पुराने उद्योग जो पुराने बंद पड़ चुके हैं या जो अच्छे जो है स्पीड पिसअप नहीं कर पाए हैं, उनको जो है दोबारा जीवित करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली अगर बजट के 3 मुख्य विजन को देखें तो रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, अपनी क्षमता को बढ़ाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास होगा। हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के जो है पर्याप्त संसाधन हैं और जो है मौके हैं, ऐसे भी जो है हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर का रुख करेंगे, रियल एस्टेट पर तो बात होगी ही, लेकिन उसके बाद जो है सर, जो आपने टेम्पल वाली बात कही कि टेम्पल सिटीज की बात कर रहे हैं आप, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब से मोदी सरकार आई थी उन्होंने कहा कि जो है अपने अंदर ही जो है देश के अंदर ही जो कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब कैसे कंजम्पशन बूस्ट होगा, जैसे आपने देखा इंडिया यूएस ट्रेड डील ना होने की वजह से हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से जो एक्सपोर्टर्स पर जो मार पड़ा, उसके लिए कहा गया कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि यहीं से कंजम्पशन जो है हम लोग देखने को मिले। टेम्पल वाली जो आपने बात कही सर, तो कई जगह है जो हमारे जो है पिलग्रिमेज जो है उनको जो है कॉरिडोर बनाने की बात कही जाए, जैसे वाराणसी में देखिए वहाँ भी कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। तो उनके आसपास के क्षेत्रों में जो विकास बढ़ाने की बात है, क्या आप उसी बात को दोहराना चाह रहे थे? देखिए विशाल जी, टेम्पल सिटी सिर्फ टेम्पल सिटी तक नहीं है, सिर्फ अयोध्या नहीं है जी, या सिर्फ वाराणसी नहीं है या सिर्फ वृंदावन नहीं है। अब आप देखो ध्यान से अगर, तो पूरे यूपी के अंदर या ऐसी जहाँ भी प्लानिंग कर रही है उसको सभी जगह से कनेक्टिविटी दी जा रही है। मतलब
इंफ्रा को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो इतना इंफ्रा डेवलपमेंट है जो शायद पिछले कभी नहीं हुआ था। तो आपस में सबकी कनेक्टिविटी जिससे कि लोग स्मूथली वहां पहुंच जाएं, रेलवे को वहां बढ़ावा देना, एयरपोर्ट का वहां खुलना, तो लोगों का कम्यूट आसान हो पाए, लोग वहां इजीली पहुंच के जा पाए, मतलब ट्रेवल इजी हो जाए, इसकी कोशिश की गई है। जब लोग आएंगे तो एक टेम्पल अपने आप में आसपास, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 70-80 किलोमीटर की इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत बड़े टेम्पल्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अयोध्या एक उभरता हुआ टेम्पल है। यहाँ आसपास उस तरह की इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाइए तो अयोध्या में वो बात नहीं थी, लेकिन आज आप जाके देखिए हर जगह नए रोड्स बन रहे हैं और मैं तो कहूँगा पूरे शहर को ही नया बनाया जा रहा है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट जब होगा तो लोग वहाँ आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और जो लोग आएंगे वहाँ रहेंगे तो वहाँ खरीदारी भी होगी, हर चीज़ की खरीदारी होगी, तो इकोनॉमी पूरी डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट का नए टेम्पल सिटीज पे फोकस भी इसके अंदर दिख रहा है। जी, अब सर आप चूंकि रियल एस्टेट के जानकार हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि रेरा का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, अब रेरा से आपकी क्या चीज़ें आसान हुई या मुश्किलें हुई, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे रेरा के आने से। देखिए विशाल जी, आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया। रेरा ये फैक्ट है कि होम बायर्स के लिए बना है और रेरा के अंदर फैसले भी जो आ रहे हैं वो थोड़े क्विक आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्विक उतना नहीं है जितने की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। और सबसे बड़ा जो दिक्कत मैं फेस कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे रियल एस्टेट मार्केट का जो एक विश्वास था उसके ऊपर, बायर्स का जो विश्वास बना था, वो धीरे धीरे उसमें कम होता जा रहा है। और जो एग्जीक्यूशन पावर है रेरा की, जो रेरा के पास अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की पावर होनी चाहिए थी, उसमें कहीं हद तक कमी दिख रही है। इससे कारण रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये जो पॉजिटिव चीज हुई थी, अगर इसे सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो ये नेगेटिव की तरफ भी चीजें बढ़ सकती है। चलिए प्रदीप सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला मनी 9 के लिए और तमाम बातों को जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, चाहे वो रियल एस्टेट के हो या ओवरऑल बजट पर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विशाल। तो चलिए, ये रहा अपडेट रियल एस्टेट का, लेकिन बजट में क्या क्या ऐलान किए गए हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि कैंसर की 17 दवाइयां जो है उनको जो है कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स और 7 हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। अब बजट की जो 7 सबसे बड़ी जो घोषणाएं हैं उनसे हम आपको जो है रूबरू करवा देते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, रिवाइज